Okay. Am I audible? Yes. Yes, sir. Okay, thank you. So let me introduce myself. I'm Chiranjit Chaudhary. I'll be taking class of paper 12 management accounting. Okay. Let us first see your syllabus before we start with the topics. Just a second. Yeah. So this is your syllabus. There are 10 chapters. Uh, each chapter has their own weightage. If you see, first chapter is Introduction to Management Accounting, which covers 5% weight. Then activity based costing 10%. And this part, decision making tools, covers the highest percentage, which is 30%. Then standard costing and variance analysis covers 15%. Forecasting, budgeting, and budgetary control covers 15%. Divisional performance measurement covers 10%. Responsibility accounting covers 5%. And decision theory covers 10%. Is there anyone who is not from commerce background? Is there anyone who is not from commerce background? Or who has not completed graduation yet? No? So I guess everyone knows the basics of, at least if you have completed graduation, then you must know the basics of, you must have an idea of costing and what is costing and all. And those who have done the classes for intermediate group 1, they already know the basic concepts of costing. So what is the pass mark? Pass mark is 40. But for us, what is the pass mark? Not 50. For us, the target should be at least 60. Our target should be to achieve exemption, because because this is a comparatively easier subject out of the, I believe, because I am teaching this subject, I believe that this subject is comparatively easier. So try to score as many marks as possible in this subject so that it covers the rest of the subjects, right? So our target should be at least 60. Anything above 60 is well and good, right? Okay. And what is the total pass mark? I think in the yesterday's introduction class already Dhanesh has very well explained regarding the pass marks and all. So yeah, let us jump on to the first topic. Introduction to Management Accounting. I'll cover the syllabus as it is, okay? I'll cover the syllabus as given in your book. I'll cover as much as examples, practical examples or problems as possible, because it is not possible to solve each and every problems, but I'll try to cover all the different types of problems as possible in the limited classes. Okay? So what do you mean by management accounting? Management accounting comprises of two terms: management and accounting, right? Now the question comes, there are different terms that you must have heard: cost accounting, financial accounting. Now what is management accounting? ये क्या नया चीज़ आ गया है? कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं? फाइनेंशियल फिगर्स से इधर उधर खेलते हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या करते हैं?
we play with figures. What financial accounting does is, financial accounting gives me figures, whether the company has made profits, what is the company's financial status, what is the debt equity ratio, whether the company has outperformed last year's figures. So it gives me, financial accounting gives me figures. What cost accounting does is, cost accounting also gives me figure. It helps me identifying what is the cost of a particular unit, what is the cost of a particular segment or cost center, and what are the areas in which I can minimize the cost. Now what is management accounting? Management accounting helps me analyze those information which I am getting from financial accounting, from cost accounting, or from any other sources, not only quantitative but also qualitative. It helps the manager, management accounting helps the managers to make decisions. Okay, it helps the managers to analyze the data and arrive at conclusion whether I should increase the production or not, whether I should buy from outside or not. Okay, so this kind of information we get from analyzing the data, and that is what management accounting encompasses, right? So management accounting is accounting that is producing useful information for management. Okay, that is people, those who are in charge of running the business, right? Understood? Now what is the scope of management accounting? As I told you, management accounting covers financial accounting, it covers cost accounting, and it helps in budgeting and forecasting, right? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें क्या बताता है? हिस्टोरिकल डेटा बताता है ना, what has happened in the past. What cost accounting does is, it provides various techniques such as marginal costing, standard costing. Okay, so this information is helpful for the management accountants to identify the potential areas of wastes and areas where they can reduce costs. And one more important aspect is budgeting and forecasting, because when we are starting a business, we must know how much fund do we have, right? We must have, because we cannot spend endlessly. We have a limited fund and we have to spend according to that fund. So budgeting is, I believe, is the most important part of any organization, because when you are spending more than the budget, then you are in a very difficult spot as an organization. So knowing the budget, and again, budget should be very much realistic. You cannot set a parameter just like जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आपको 60 मार्क्स स्कोर करना है. मैंने नहीं बोला कि आपको 80 स्कोर करना है, 90 स्कोर करना है. रियलिस्टिक होना पड़ेगा बजट को, जो आप अचीव कर सकते हो, है ना. So budgetary control controls the activities of the business through operations of budget by comparing the actual data with the budgeted figures. हम लोग क्या करते हैं? एक्चुअल डेटा को बजटेड फिगर्स से कंपेयर करते हैं टू फाइंड आउट द डेविएशंस. जैसे हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं? बजटेड फिगर्स और एक्चुअल फिगर्स को कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस और बजटेड प्राइस को कंपेयर करते हैं, है ना, टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एरियाज ऑफ वेरिएंसेस, है ना. देन cost control procedures. Scope of management accounting also covers cost control procedures. It includes inventory control, cost control, labor control, budgetary control and variance analysis. ठीक है. इन्वेंट्री कंट्रोल का कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो? कैसे इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं हम लोग? कुछ मेथड्स बताओ. इंटरमीडिएट में भी यू मस्ट हैव स्टडीड इन बीकॉम आल्सो. क्या क्या मेथड्स हो सकता है? जस्ट इन टाइम अप्रोच, लीफो, फीफो, है ना, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी. यू मस्ट हैव हर्ड इन बीकॉम आल्सो ना, रीऑर्डर क्वांटिटी, देन मैक्सिमम क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी. सो these are all part of inventory control.
राइट. लेबर कंट्रोल का भी आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ोगे, लेबर वेरिएंसेस, है ना, आइडल टाइम वेरिएंस, सबका अपना अपना पर्पस है ना. रेट, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वेदर लेबर्स आर वर्किंग और नॉट. Then budgetary control, variance analysis. So these are the various techniques which we'll again study in this group. There are not all, but some of the techniques which we'll be studying in this group. Okay. Then reporting. For reporting we use various techniques such as graphical representation, and there are various AI tools in nowadays. You just upload an Excel sheet and the AI will give you the entire report, analyze the report itself. So having the information is not enough, but presenting the information and analyzing the information is one of the most important function. Because if I say the company has quarter on quarter increase in profit of 10%, लास्ट क्वार्टर से मेरा इस क्वार्टर में प्रॉफिट 10% इंक्रीज हुआ, या वाइस वर्सा 10% डिक्रीज हुआ. नाउ व्हाई द प्रॉफिट हैज डिक्रीज्ड, दैट अगेन यू हैव टू गो बैक टू द वेदर द रेवेन्यू हैज डिक्रीज्ड और द कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड, है ना. इधर रेवेन्यू आपका डिक्रीज हुआ है या कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, तो वो सब ड्रिल डाउन करोगे आप, है ना. सो विद द हेल्प ऑफ रिपोर्टिंग वी ड्रिल डाउन द एक्चुअल रीजन ऑफ whether actual reason of reduction of revenue or reduction of profit, right. Methods and procedures. It undertakes special cost studies and estimates and reports on cost volume profit relationship. This is again important. CVP analysis, we'll have a separate chapter for CVP analysis, cost volume profit analysis. Okay, cost volume profit relationship under changing circumstances. मतलब आप अगर 10 यूनिट, एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट एक्स्ट्रा यूनिट इन योर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी. उसका भी अलग टेक्निक है. क्या टेक्निक है, उसको क्या बोला जाता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट. मार्जिनल कॉस्टिंग से हम लोग वो देखते हैं ना, मार्जिनल कॉस्टिंग. सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स एंड प्रोसीजर्स थ्रू विच हम लोग चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं. ठीक है. Then tax accounting. Management accounting also helps in, I mean tax accounting is also a part of management accounting. What is tax accounting? Tax accounting is nothing but filing your returns timely, paying the advance tax, and taking advantage of depreciation. Depreciation का भी एक अलग फंडा होता है. आप कैसे उसको डिडक्शन लोगे इनकम टैक्स में, क्या क्या डिडक्शंस अवेलेबल है फॉर यू. सो नोइंग दोज थिंग्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना. जैसे आप कोई मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई इक्विपमेंट परचेज कर रहे हो. इक्विपमेंट परचेज करने से आपको इनकम टैक्स में क्या डिडक्शन मिलेगा, उसका यू विल गेट डिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ depreciation which will be over a period of time. But if you are outsourcing, instead of buying the machine, you are outsourcing the activity to someone else, थर्ड पार्टी को आपने दे दिया. जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल इंडस्ट्री का मैं बात करता हूँ. ऑयल इंडस्ट्री में क्या है, जैसे ड्रिल करने के लिए रिग चाहिए होता है, मशीन चाहिए होता है. तो मशीन ऑयल का खुद का भी हो सकता है या थर्ड पार्टी को वो आउटसोर्स भी कर सकता है. अगर खुद का होता है मशीन, देन उसका डेप्रिसिएशन बेनिफिट मिलेगा मुझे, इनकम टैक्स में डिडक्शन जो मिलेगा डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा, राइट. बट इफ आई आउटसोर्स दैट एक्टिविटी, मैं उसको क्या पे करूंगा, जो थर्ड पार्टी है उसको रेंटल पे करूंगा. वो रेंटल में मुझे एंटायर अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा, है ना. तो वो भी मुझे एनालिसिस करना है वेदर बाइंग द प्रोडक्ट इज बेनिफिशियल और outsourcing the service is beneficial for me with the perspective of income tax, है ना. Then internal financial control.
So management accounting includes internal financial control methods like internal audit, efficient office management. इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे एक अप्रूवल हायरार्की होता है. अगर मान लो कंपनी में मुझे ही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि तुम ही सब पेमेंट रिलीज़ करो. कल को हो सकता है मैं वो खुद का प्रॉफिट के लिए कुछ गलत अमाउंट रिलीज़ कर दिया. सो देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ मेकर एंड चेकर, या बोल लो मेकर या अप्रूवर. आप प्रोसेस कर रहे हो, समवन एल्स विल अप्रूव. व्हाट डज इट डज इज it ensures that there is a cross check, there is a control over the expenditure that you are incurring. अभी जैसे कि मैंने बताया, फॉर एग्जांपल ऑयल इंडस्ट्री का मैंने बताया, ब्रिक परचेज करना है या उसको हायर करना है, कौन डिसाइड करेगा? देयर शुड बी अ इंटरनल कंट्रोल कि कोई एक पर्सन डिसाइड नहीं करने वाला है. उसका हायरार्की होगा, फाइनेंशियल हायरार्की की इतना लिमिट तक लोकल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, इतना लिमिट क्रॉस करने से बोर्ड अप्रूव करेगा उसको, है ना, या इतना लिमिट अप्रूव करने से डायरेक्ट चेयरमैन अप्रूव करेगा. सो देयर शुड बी एन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर वो भी आता है. देन इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा टू द मैनेजमेंट एंड एडवाइजिंग देम ऑन डिसीजन मेकिंग, बिकॉज एवरीवन इज नॉट फाइनेंस प्रोफेशनल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारे लोग टेक्निकल लोग हैं, दे डोंट नो व्हाट द प्रॉफिट इज, व्हाट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो, है ना, व्हाट इज द लाइबिलिटी. बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही नहीं पता उन लोगों को, डेप्रिसिएशन क्या होता है नहीं पता. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, उस डेटा को इंटरप्रेट करके क्या करेगा, ऐसा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेगा सो दैट द अदर यूजर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दोज इंफॉर्मेशन. देन अदर ऑफिस सर्विसेज, जो कि वेरियस टूल्स, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं. टैली हो गया, है ना, SAP हो गया, ERP एनवायरनमेंट में काम करते हैं हम लोग, एक्सेल हो गया, ठीक है. सो दीज आर द वेरियस ऑफिस सर्विसेज विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है. सो क्या क्या पढ़ा हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप में, क्या क्या था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स, रिपोर्टिंग मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, टैक्स अकाउंटिंग, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरप्रिटेशन एंड ऑफलाइन सर्विसेज, ठीक है. जनरली मैं थियरी करवाता नहीं हूँ, यू नो, मैं थियरी में कम ही फोकस करता हूँ, बट दिस टाइम आई थॉट दैट let us focus on theory also, because a lot of questions comes from this part. So understanding the basics is also important. You might think that क्या है तो general बात है, but this is also important, okay, equally important. Generally I don't teach theory, but this time I am doing so. I hope you will not get bored that much. So evaluation of management accounting. There are eras, various stages over a period of time. जैसे फर्स्ट स्टेज प्रायर टू 1950s. इस पीरियड में क्या हुआ था? द पीरियड विच इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज क्लासिकल एरा इज अ पीरियड वेयर द फोकस वॉज ऑन कॉस्ट डिटर्मिनेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल. इसमें बेसिक था, उतना एनालिसिस का जरूरत नहीं था, जस्ट कॉस्ट डिटर्मिनेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल था, ठीक है. And what are the methods that were used at that point of time? Standard costing, direct costing, records of cost accounting, allocation of indirect cost, uniform costing, absorption costing, budgeting, ROI, ton mile ratio, etc. Then second stage lasted from 1950 to 1965. So this period is referred to as the age of information for management planning and control. During this period, the focus was on managerial accounting. Focus of managerial accounting was to provide information on planning and controlling issues. यहाँ पे भी वही था, यहाँ पे
कॉस्ट डिटर्मिनेशन में फाइनेंशियल कंट्रोल है, यहाँ पे थोड़ा हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा इवॉल्व हो रहे हैं, हम लोग प्लानिंग में जा रहे हैं, बजटिंग वगैरह में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एग्जिस्टिंग जो प्रैक्टिसेस है दोज वेर ऑलरेडी फॉलोड, बट कुछ एडिशनल हम लोग उसको मॉडिफाई करके हम लोग इम्प्रूवमेंट करें। जैसे ये एरा में आप लोगों को पता होगा थोड़ा जापानीज इन्फ्लुएंस, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 का बाद कैसे कॉस्ट कटिंग करना है, कॉस्टिंग में थोड़ा ज़्यादा फोकस चला गया था। तो इसमें देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ही डेवलपमेंट कुछ कुछ आया, मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट आया, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन यू मस्ट हैव हर्ड, है ना, transfer costing, etc. Then third stage lasted from 1965 to 1985. During this period the companies began to seek both cost reduction as well as quality improvement at the same time, ठीक है। The focus was on reduction of waste resources in the production by eliminating no value activities. So यहाँ पे प्राइमरी फोकस क्या था हमारा, प्राइमरी फोकस था कॉस्ट रिडक्शन एज वेल एज क्या हो रहा है पता है, कॉस्ट रिडक्शन एज वेल एज क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। व्हाट वर द वेरियस मेथड्स यूज्ड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो कि एक आपका अलग से चैप्टर भी है अभी इसमें, देन एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, काइजन, जस्ट इन टाइम अप्रोच, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, राइट। कैसे कोरिलेट करोगे, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, जैसे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ओवर अ पीरियड ऑफ प्रोडक्ट, लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट वो कैसे बिहेव करता है। सो इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ, जैसे एक लाइफ का बाद वेस्टेज, प्रोडक्ट तो वेस्ट हो जाएगा ना, या डेप्रिसिएशन होकर उसका वैल्यू मिनिमल हो जाएगा, सो उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, दिस काइंड ऑफ यू कैन कोरिलेट दिस टू। नाउ फोर्थ स्टेज स्टार्टेड फ्रॉम 1985 टिल डेट. During this period, various technological advancements took place, right? Globalization happened, trade liberalization happened. So, जो कि अभी भी ongoing है ना? तो during this period यहाँ पे भी activity based costing था, उसका enhance जो existing practice है वो तो ongoing है. Activity based costing में focus किया गया है, production, just in time, value chain analysis, 5 forces model, PEST, SWOT, ठीक है, customer profitability analysis. So these are the various methods used during this period, ठीक है. So these are the traditional techniques and the contemporary techniques. What are the traditional techniques of management accounting? Financial statement analysis, जैसे बहुत सारा ratios आप निकालते हो, है ना, cash flow analysis, marginal costing, absorption costing, standard costing, opportunity cost, budgeting, CVP, ABC, activity based costing. So these are the traditional techniques, traditional costing techniques. What are the contemporary techniques? Target cost, just in time, total quality management, theory of constraints, value chain analysis, benchmarking, SWOT, बैलेंस स्कोर कार्ड, काइजन. यहाँ पे बहुत सारा टेक्निक्स में जापानीज लोग वेर वेरी एडवांस्ड एंड वेरी वेल वर्स्ड विद दिस टेक्निक्स. लॉट ऑफ टेक्निक्स वेर डेवलप्ड बाय द जापानीज एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द जापानीज, ठीक है. ओके, now the relationship between financial accounting and management accounting. okay, जैसे कि मैंने बताया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लासिफाइज, एनालाइज, रिकॉर्ड्स, समराइज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड. दिस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. नाउ व्हाट मैनेजमेंट अकाउंटिंग डज इज इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजंस. Then financial accounting is prepared to reflect what true and fair view of financial position. Management accounting helps management to take steps and strategize. The scope of financial accounting is pervasive, but not as much as management accounting. Financial accounting का scope बड़ा है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना management accounting का. Management accounting का scope is much broader.
It includes analyzing the information and reporting to the management, and it, as we have seen, it includes various techniques and methods, including financial accounting, but not limited to. Information type, as I already told you, it is quantitative. Financial and management accounting, it is quantitative as well as qualitative. Interdependence, financial accounting is not dependent on management accounting, right? But management accounting is dependent on financial accounting because the primary data comes from financial accounting, on the basis of which we take decisions. Statutory requirement, financial accounting, obviously you know it is mandatory, but management accounting has no mandatory requirement, but there are certain reportings which are being made mandatory nowadays, जैसे ESG compliance हो गया, और भी बहुत सारे reports हैं जो कि आज का डेट में मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है. फॉर्मेट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पता है, स्पेसिफिक फॉर्मेट है, बट देर इज नो स्पेसिफिक सेट ऑफ फॉर्मेट फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग. नाउ हु आर द यूजर्स? मेनली फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एज वेल एज ऑल स्टेक होल्डर्स. और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है कौन यूज करेगा? इनसाइडर्स, कंपनी का जो एम्प्लॉयज़ है या मैनेजमेंट है, दे विल यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन कंपनी से बाहर नहीं जाता है, ये उन लोगों के लिए रेलेवेंट भी नहीं है ना. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज वेरीफाइबल, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन जो है मे नॉट बी immediately verifiable because it includes qualitative information also, so it may not be verifiable. ठीक है. Now cost accounting and management accounting. Cost accounting revolves around the computation of cost, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. उसका स्कोप इतना ही है कि उसको कॉस्ट कंट्रोल करना है, कॉस्ट रिडक्शन करना है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट मेक इफेक्टिव डिसीजंस अबाउट ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, जैसे मेक और बाय डिसीजंस हो गया, ठीक है, वेदर टू कंटिन्यू शट डाउन या कंटिन्यू द बिजनेस वाला केस हो गया, राइट. Cost accounting prevents a business from incurring cost beyond budget through budgetary control. But management accounting offers a bigger picture on how we should, जैसे वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है ना. पहले प्लानिंग होगा, कंपनी कितना एक्टिविटी करेगा. बजटिंग तो बहुत बाद आता है. बजटिंग और प्लानिंग में क्या डिफरेंस है? बजटिंग, फोरकास्टिंग, प्लानिंग में जैसे हम लोग ओवरऑल कंपनी का एक विजन बनाया, कंपनी को प्रॉफिट तो करना है, बट ओवरऑल एक विजन भी है ना कंपनी का कि यहाँ तक पहुँचना है मुझे. बट बजटिंग क्या होता है? बजटिंग इज लिमिटेड टू फिगर्स, क्वांटिटेटिव फिगर्स, है ना. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? वो बड़ा पिक्चर शो करता है. देन again, cost accounting is quantitative, management accounting is qualitative. Cost accounting is one of the many subsets of management accounting, right? Then management accounting is universal, उसका अंदर में सारा कुछ आ जाता है, financial accounting, cost accounting and all. Basis of decision making, the task of decision making is very less, even if there is some, it is very historic information. कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करता है? हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन में ही काम करता है. बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? हिस्टोरिक एज वेल एज फ्यूचर का फोरकास्ट करता है. कॉस्ट अकाउंटिंग इज मैंडेटरी फॉर सर्टेन सेट्स ऑफ इंडस्ट्रीज, और ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी तक मैंडेटरी नहीं है. डिपेंडेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग इज इन डिपेंडेंट ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जस्ट लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, but management accounting is dependent on both cost as well as financial accounting. Then cost accounting, user of cost accounting कौन है? management, मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स है, but management accounting again only for management. जैसे cost audit report आपको पब्लिश करना होता है, so
इट इज़ यूजफुल फॉर शेयर होल्डर्स एज वेल एज वेंडर्स, है ना. पानी, एक सेकंड पानी भी कर. Now, impacts of new business environment on management accounting. जैसे आप आजकल देखते होंगे, ये ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया है ना. कितना % टैरिफ लगा है? डू यू फॉलो द न्यूज़? कितना % टैरिफ लगा है? 50%, है ना. So you may not know what tomorrow offers you, है ना. So we have to be adaptive, we have to be ready for competition, global competition, है ना. So global competition में जैसे reduce tariffs, better transport and communication, global competition, फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड वैल्यू एनालिसिस. जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट बैंक्स, पहले ऐसा था कि कस्टमर्स बैंक में दौड़ दौड़ के जाते थे, बैंक में लाइन में क्यू में खड़ा रहते थे. लेकिन आजकल देखोगे बैंक वाला घर पे आता है. वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट. द बैंक्स आर ऑफरिंग सर्विसेज विच आर अर्स्टवाइल नॉट अवेलेबल, है ना. तो चेंजिंग एनवायरनमेंट में हम लोग को अडॉप्ट करना है. जैसे बैंक का एग्जांपल ले लो, बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहा है, सिर्फ बैंकिंग में लेंडिंग और डिपॉजिट में फोकस नहीं कर रहा है. दे आर डाइवर्सिफाइंग इनटू इंश्योरेंस, देन म्यूचुअल फंड्स, है ना. सो एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग्स. सो यू कैन नॉट बी restricted to a particular line of business. You have to think ahead of the technological competitions or technological advancements that are coming into picture. So we should be ready for the global competition. Now, changing product life cycle, shorter life cycles due to changing customer needs. First mover advantage is crucial. Management accountants कंट्रोल कॉस्ट अर्ली एंड स्पीड अप टाइम टू मार्केट. ठीक है. प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल आजकल बहुत ही छोटा हो गया है, या बहुत सारा प्रोडक्ट्स नियर फ्यूचर में मे नॉट बी दैट रेलेवेंट. जैसे आप क्रूड ऑयल या पेट्रोल का ही बोल लो, आजकल ईवी आ गया है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गया है. सो प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो भी चेंज हो रहा है. एंड हम लोग को क्या देखना है एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, हम लोग को देखना है कि हम लोग को फ्यूचर देखना है. वी कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उतना में हम लोग रेस्ट्रिक्ट नहीं रह सकते. हम लोग को फ्यूचर देखना है कि फ्यूचर में वो प्रोडक्ट ऑब्सोलेट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे एज ए कंपनी. अब कोई कंपनी में काम कर रहे हो, आप उतना में लिमिटेड नहीं रह सकते हो कि मेरा प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करूँगा. प्रॉफिट आप इस साल में मैक्सिमाइज़ कर लोगे, 5 साल तक मैक्सिमाइज़ कर लोगे, उसका आगे क्या, उसका आगे हो सकता है प्रोडक्ट रेलिवेंट ही ना हो, है ना. सो वी शुड बी रेडी फॉर द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस एज पर द कस्टमर प्रेफरेंस. देन एडवांसेस इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी. जैसे कस्टमर्स आर डिमांडिंग
for high quality, low cost products and services, shift to lean manufacturing, just in time and advanced manufacturing technologies. So हम लोग को कॉस्ट को मिनिमाइज करने का सोचना चाहिए through applying various techniques such as just in time advanced manufacturing technologies so that we stay relevant to the changing environment. Impact of information technology, e-business, e-commerce. जैसे आप I need not tell you what happened to the local vendors after this e-commerce websites came into picture. Flipkart, Amazon आने के बाद local vendors का क्या हालत हुआ, everyone knows. So we should be updated to the technological changes also. बहुत सारा vendors तो आजकल डायरेक्ट टाई अप कर ले रहा है e-commerce वेबसाइट से, है ना. Environmental and sustainability issues. ESG focus, high environmental cost, regulatory fines. So these issues need also be addressed. Companies measure and report environmental cost, resource usage and pollution, because बहुत अभी तो pollution करने से बहुत heavy fines लग जाता है. So as a management accounting we have to see those things also. जैसे ESG compliances आजकल बहुत ही strict हो गया, आपको report भी present करना होता है उसके regarding, right? Deregulation and privatization. End of protected monopolies. More competition are taking into place and जैसे ग्लोबलाइजेशन होने का बाद बहुत सारा फॉरेन कंपनीज आर एंटरिंग इनटू द मार्केट, सो नो मोर मोनोपोलीज देयर, है ना. नीड फॉर एक्यूरेट कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी सिस्टम टू स्टे कंपिटिटिव. ऑब्वियसली जो बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगा या जो चीपर रेट में सेम क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, एज ए बायर वो वहीं पे जाएगा, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो. फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी, जैसे वी नो जनरल इंश्योरेंस या नेशनल इंश्योरेंस आर द स्टेट इंश्योरेंस कंपनीज, है ना. बट नाउ इट इज पीपल हैव बिकम अवेयर एंड दे गो फॉर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज बिकॉज दे ऑफर कंपेरेटिवली लेस प्रीमियम्स, है ना. सो टू स्टे कम्पिटिटिव, इवन द PSUs और वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज ऑल्सो हैव टू अडप्ट टू द, जैसे स्टेट बैंक हो गया. स्टेट बैंक भी देखो हो सकता है बहुत बड़ा बैंक है, बट दे आर नॉट स्टेइंग बिहाइंड इन एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस. कहीं पे भी वो लोग पीछे नहीं है ना. वो लोग तो मतलब ऐसे ऑब्लिवियस होकर बैठ सकते हैं कि वी आर द बिगेस्ट बैंक इन इंडिया, सो वी स्टे ऑब्लिवियस एंड विल नो एनीवेज कस्टमर विल कम टू अस, बट दे कैन नॉट डू सो, है ना, विद द changes that are taking place at the competition with the global competition that are taking place. हो सकता है restriction भी लगा दिया हो कि global companies आके इंडिया में business कर नहीं सकते, but what they do is they enter Indian market through investing in Indian companies. वो indirect investment का through enter कर लेता है अगर restriction लगाया भी, है ना. So to stay competitive we must stay relevant and we must adapt to the changes that are taking place. ठीक है. Now customer orientation, competitive edge from being customer driven. Customer satisfaction depends on cost, quality, reliability, delivery and innovation. सारा points cover हो गया. To stay relevant हम लोग customer satisfaction देखना है, कॉस्ट में फोकस करना है, क्वालिटी में फोकस करना है, ब्रांड बिल्डअप करना है, रिलायबल बनना है एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी करना है, राइट. सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट chapter 1, which covers the 5% of your this syllabus, है ना. So what did we study? We started with what is management accounting, what followed by the scope of management accounting, right.
followed by evolution, then the differences or relationship between financial accounting, management accounting and cost accounting, and how to stay relevant with the ever changing modern economic environment. Okay. So I try to cover all as much as possible all the topics. चलो इसमें देख लो क्या क्वेश्चन आंसर कर सकते हो. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है आंसर बताओ. Accumulates, summarizes, analyzes the available data, is primarily concerned with the requirement of the management, makes corporate planning and strategy effective. बताओ क्या है आंसर. All of the above. All of the above. All of the above ना. Management accounting can be viewed as market oriented, management oriented, accounting oriented or manager oriented. Management oriented. Management oriented accounting. Why not manager oriented accounting? Yes, the primary objective is to present data information to the management, not a particular manager. Manager तो एक जन होगा, but management में बहुत सारे managers होंगे, है ना. The main objective of management accounting is to maintain accounting records, to know the amount of dues from the customers and suppliers, to ascertain, analyze, interpret the results of the business and operations, to record all the business transaction. कौन सा है? C. To ascertain, analyze and interpret the results of business operations. C. Dash is the study of management aspects of financial accounting. Management accounting. The purpose of management accounting is to help managers make decisions. Management accounting assists the management in all of the above. Period of lost relevance. Third stage. Period of lost relevance. क्या है? Third stage. Creation of value through effective use of resources is the focus area of the creation of value. Fourth stage. Just in time management and activity based costing developed during थर्ड में भी था, फोर्थ में भी था ना, दोनों में. बट मेनली कब डेवलप किया? फोर्थ स्टेज में ना, जस्ट इन टाइम. थर्ड में भी था बट जस्ट इन टाइम एबीसी मोस्टली थ्राइव्ड इन क्या है आंसर में? क्या है? थर्ड है ना. यहाँ पे देखो, थर्ड में बेसिकली स्टार्ट हुआ है, फोर्थ में उसको एडवांस स्टेज में लेके गए. सो इट स्टार्टेड इन द थर्ड स्टेज. Management accounting deals with both quantitative as well as qualitative data. Management accounting is primarily not concerned with the requirements of the management. True or false? False. Not concerned लिखा हुआ है ना.
ट्रू और फॉल्स में थोड़ा अच्छा से इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना हो, कंफ्यूज करने के लिए एक दो वर्ड ऐसा ऐड कर देगा ना. वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, है ना, जो कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी बोलता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मेनली पास्ट ओरिएंटेड. फॉल्स. The primary objective of management accounting is to manage company account and improve sales. True or false? ये तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्या, कंपनी अकाउंट मैनेज करना? नहीं है. की सक्सेस फैक्टर्स ऑल्सो नोन एज कंपिटिटिव एम्फेसिस. है ना, कंपिटिटिव तो रहना है अपने को. Benchmarking is the process of measuring the performance of the company's products, services or processes against those of another business considered to be the best in the industry. True. In organizations there are typically 3 levels of management: top level, middle level and first level. True. Management accounting concentrates on post-mortem analysis. पोस्टमार्टम में क्या करते हैं? बॉडी को खोल के पूरा एनालिसिस करता है ना, कैसे मौत हुआ है. पोस्टमार्टम में वो करता है ना, रीज़न आइडेंटिफाई करता है. तो वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पोस्टमार्टम ही करता है. Any questions? Any questions? So in our next class we'll be discussing the topic which is activity based costing. इसका कितना वेटेज है activity based costing का? 10. तो थोड़ा अच्छा से करना है activity based costing.
पर्टिकुलर टॉपिक से अगर इतना आ रहा है तो अच्छा से करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, जस्ट बेसिक थोड़ा टच अपन करते हैं। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड्स में, बिफोर अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। एंड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में भी हमें क्या सीखना है, ओवरहेड्स हम लोग कैसे एलोकेट करते हैं वो सीखना है। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा, इफ़ यू हैव स्टडीड, कि ओवरहेड्स को हम लोग कुछ बेसिस से डिवाइड करते हैं, जैसे लेबर आवर्स हो गया, मशीन आवर्स हो गया, उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या स्टेप्स है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में टू कैलकुलेट ओवरहेड्स। फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ओवरहेड्स सच एज पेरोल मेंटेनेंस, बिल्डिंग रेंट, शॉप रेंट, इलेक्ट्रिकल एक्सपेंडिचर्स, है ना। देन we estimating the overhead cost for a specific tracking period, for example a calendar month or semi-annually. Then selecting a cost driver that is linked with the production of your product or service, जैसे machine hours हो सकता है, ठीक है, या labor hours हो सकता है। Estimate a defined number for cost drivers. For example, if you are using man hours for a single month, you would simply multiply the number of hours worked per day by the number of employees. मतलब कि मान लो मैं बता दूं कि आपका 2 प्रोडक्ट है, लेकिन आपका ओवरहेड्स है 10 lakhs. Your overheads in a particular month is 10 lakhs. And there are 2 products, product A and product B. और हमारा जो कॉस्ट ड्राइवर है, हम लोग का कॉस्ट ड्राइवर है कि लेबर आवर इज द कॉस्ट ड्राइवर। मतलब ये ओवरहेड जो है हमें किस बेसिस पे डिवाइड करना है, लेबर आवर का हिसाब से। सो टोटल लेबर आवर, लेट्स से 5000 लेबर आवर एक मंथ का यूज हुआ है। उसमें से मैं क्या देखूंगा कि ए में कितना यूज हुआ और बी में कितना यूज हुआ। लेट अस से कि ए में 3000 आवर यूज हुआ, बी में 2000 आवर यूज हुआ। So what will be the cost overhead? How can we distribute the overhead cost amongst A and B? Tell me, कितना होगा? Simple mathematical calculation. $10 lakhs है भाई। पर आवर वैसे नहीं निकलता, पर आवर जो रेट निकलेगा, लेबर रेट पर आवर या ओवरहेड रेट, सॉरी क्या हो गया, क्या हो गया ये? कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया, बट ठीक है। अगर 10 lakhs मेरा वो है, टोटल ओवरहेड कॉस्ट है, 5000 इज द टोटल लेबर आवर्स, व्हाट विल बी द कॉस्ट पर लेबर आवर, ओवरहेड पर लेबर आवर कितना निकालो? 10 lakhs डिवाइड बाय 5000 कितना? 200। 10 lakhs डिवाइड बाय 5200 पर लेबर आवर।
अगर मैंने प्रोडक्ट ए में अगर 3000 लेबर आवर यूज़ किया तो प्रोडक्ट ए में कितना कॉस्ट एलोकेट होगा? हाँ, 6 lakhs, और प्रोडक्ट बी में 4 lakhs, है ना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, हम लोग इस हिसाब से ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम लोग इस हिसाब से ओवरहेड्स को एलोकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ से लेबर आवर्स, या ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, या ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ड्रॉबैक क्या क्या है? इट इग्नोर्स द रिसोर्स ऑफ यूजेज डिफरेंसेस। It does not account for the fact that different products consume different varying amount of resources, है ना। अभी फॉर एग्जांपल एक ही मशीन में मेरा 2 प्रोडक्ट निकल रहा है, अभी मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा कि दोनों प्रोडक्ट के लिए कितना कितना मशीन आवर यूज़ हुआ है? सेम मशीन मेरा दोनों प्रोडक्ट, एक मशीन में इनपुट डालता हूँ उसमें 2 प्रोडक्ट निकलते हैं, है ना। सो मैं कैसे निकालूंगा? या फिर फॉर एग्जांपल ओवरहेड्स की बात कर लूँ, एक फैक्ट्री है उसमें लाइट्स मेरा जल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट के लिए कौन सा, जैसे मेरा लेबर काम कर रहा है वहाँ पे, मैं क्या किया, इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस को मैंने ऑन द बेसिस ऑफ लेबर और मैंने डिवाइड कर दिया। लेकिन कोई बता सकता है कि मतलब इज इट करेक्ट कि ऑन द बेसिस ऑफ मैन पावर डिवाइड करना इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस को? क्या लगता है? नहीं लगता है। वो करेक्ट है? नहीं है। सो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मे हैव डिफरेंट यूसेज, है ना। या बहुत सारा तुम्हारा एक फैक्ट्री में मान लो तुम्हारा प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा फैक्ट्री में प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो दोनों तुमने क्या किया, दोनों फैक्ट्री का ओवरहेड्स को क्लब करके डायरेक्ट मशीन आवर्स से, डायरेक्ट लेबर आवर्स से तुमने डिवाइड करके एलोकेट कर दिया, जबकि मुझे पता था कि इस फैक्ट्री में प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस हो रहा है, उस फैक्ट्री में प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। Applies large overheads, often exceeding 50% of the total cost as a percentage of direct labor, leading to inaccurate। जैसे अभी हम लोग 3000 और 2000 किया था ना, एक में तो 66% आ रहा था, एक में 33% आ रहा था, है ना। सो ऑफन हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज का बेसिस में एक ही प्रोडक्ट में ज़्यादा कॉस्ट डाल देते हैं। अभी बताओ, हो सकता है प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस कम हो, प्रोडक्ट बी का सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो मेरा, समझ रहे हो। तो प्रोडक्ट ए में ही तुम अगर कॉस्ट एलोकेट कर दिया, उसका प्राइस उतना है ही नहीं, उसको मेन प्रोडक्ट है ही नहीं, तो गलत होगा ना, समझ रहे हो। सो दैट्स वाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। देन पुअर कॉस्ट रिफ्लेक्शन। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या करता है, यूजेस वॉल्यूम बेस्ड मेजरमेंट दैट फेल्स टू कैप्चर ओवरहेड्स लाइक सेटअप, मटेरियल हैंडलिंग। एक काम करते हो, इस सब डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करो, बिकॉज नेक्स्ट टीचर आपका आ गए, है ना। क्या हो गया पता नहीं, समथिंग हैज हैपेंड। समथिंग हैज हैपेंड, आई डोंट नो। Anyways, he'll take care of it. So I'll end the class over here. Thank you. Thank you.